Okay, students. So now we will study the mechanism of enzyme action. So before going in that, you should know some of the properties of the enzyme. Then you will understand it. Properties of enzymes. Number one property is their chemical nature. You know this, that all enzymes are proteins in nature, except ribozyme, because ribozyme is a RNA molecule. So all the enzymes are protein. Number two, enzymes have active site. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करोगे, एंजाइम तो जितने भी एंजाइम है वो सब के सब प्रोटीन है। क्या बताया था मैंने हायरार्की? कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट, दो प्रकार के कैटलिस्ट, और एक केमिकल कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट दो प्रकार के आपके एंजाइम्स and ribozyme. Enzyme are protein, ribozymes are RNA. ठीक है? This is clear to you? Yes, sir. One second, फिर alignment गड़बड़ हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। Second property is enzyme possess active site. All enzyme molecules contain a specific cleft or pocket in its structure, which is actively involved in catalysis. And this cleft or pocket is known as active site of enzyme. If this is a enzyme molecule, it will have, all enzymes have active site or sites in them. Okay. So इस एंजाइम का, suppose this is the structure, so this will be, this is that cleft or pocket, this is active site. In the active site, substrates fit. Okay, so this cleft or pocket is known as active site, and this active site binds with substrate, and the functional group present in the active site modify the substrate during catalysis. Okay, students, इस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, and the functional group present in this active site, functional group present in the amino acids which is present in the active site, the amino acids which are forming the active site, functional groups present in them binds with substrate, okay, and modified the substrate during this catalysis. Number 3, enzymes show specificity. Enzyme catalyzed reaction are highly specific. मतलब
कि एक पर्टिकुलर एंजाइम विल कैटलाइज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. Okay, so in this you will find there are two types of enzyme specificity. One is called as absolute specificity. Another one is called specificity. Enzymes belonging to this category, which show absolute specificity, acts only on one type of substrate. That's why these enzymes are having absolute specificity. They act on only one type of substrate. For example, catalase enzyme acts on H2O2 only. So this enzyme is having absolute specificity for its substrate. Some enzymes act on group of closely related substrates, and this type of specificity is known as group specificity. So the enzymes showing group specificity belonging to this group. For example, enzyme alcohol dehydrogenase. Okay. So this enzyme, alcohol dehydrogenase, brings the dehydrogenation reaction of many types of alcohol. इसके सबस्ट्रेट्स हैं मिथेनॉल भी, इथेनॉल भी, इन मिथेनॉल में एक कार्बन है, यही होगा ना, HCOH, इथेनॉल, CH2, CH3OH. दोनों तरह के सबस्ट्रेट्स का ये डिहाइड्रोजनेशन कर सकता है. ओके. एक और एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, बार बार आप सुने हो नाम इसका. ये भी ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करता है, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि मिथेनॉल. हाँ बोलिए. सर मिथेनॉल का तो CH3OH होगा. हाँ हाँ, ये CH3 OH मिथेनॉल. ओके, टर्मिनल कार्बन है, बैलेंस फुलफिल हो गया. फिर इथेनॉल तो हो गया आपका 2 कार्बन वाला, तो CH2 CH3, या इसको ऐसे लिखोगे CH3 CH2OH, ये हो गया CH3OH मिथेनॉल. इथेनॉल, इन दोनों का डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज करता है, इसलिए ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है ये एंजाइम. ओके. हेक्सोकाइनोज ये फॉस्फोराइलेट करता है एल्डोज शुगर जो हेक्सोज है उनको. ठीक है, तो ना ही ये सिर्फ ग्लूकोज को बल्कि गैलेक्टोज को भी और मैनोज को भी ये फॉस्फोराइलेट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. ओके स्टूडेंट्स, कितना समझ में आया 3 प्रॉपर्टी? Yes. Fourth property, enzyme
has catalytic efficiency. They show a range of catalytic efficiency between 10 to the power 3 to 10 to the power 8-fold. Enzymes can increase the rate of the reaction from 1,000 times to 100 million times. They can increase the rate of reaction in this rate. कुछ एंजाइम 1000 गुना भी बढ़ा सकते हैं और कुछ एंजाइम 10 लाख गुना भी बढ़ा सकते हैं, 10 करोड़ गुना भी बढ़ा सकते हैं, और इसके बीच में so you can say that enzyme catalyzed reactions are highly efficient, and the rate of enzyme catalyzed reaction is usually between this range. These many times faster than uncatalyzed reaction it can bring upon. Okay. Efficiency of enzyme जो है वो टर्नओवर नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है. कोई एंजाइम कितना एफिशिएंट है इसको हम टर्नओवर नंबर में एक्सप्रेस करते हैं. टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर होता है, it is defined as the number of substrate molecules converted into product by one enzyme molecule in 1 second. फिर से बता देते हैं, turnover number is defined as the number of substrate molecules converted into product by one enzyme molecule in 1 second. Okay, number of substrate molecules converted into product. ठीक है, तो आप इसको लिखोगे number of product molecules formed, क्योंकि सबस्ट्रेट मान लो कि 1000 मॉलिक्यूल है, इसमें से 200 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो हम 200 मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वो पहले सबस्ट्रेट था. टर्नओवर नंबर विल बी 200, यानी number of substrate molecules converted into the product, that is 200. By per second, number of product molecules formed per second. Okay. तो अगर 1 सेकेंड में 1000 मॉलिक्यूल था ओरिजिनल कंसंट्रेशन, अगर 1 सेकेंड में 200 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए और एक ही एंजाइम है तो only one enzyme molecule is there, so it is turnover number is measured as number of substrate molecules converted into the products per second by an enzyme, by one enzyme molecule. Okay, clear? By number of product molecules formed per second by one enzyme molecule. तो वह उस
एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाएगा कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट को पर सेकेंड में बना रहा है, कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर रहा है एक एंजाइम पर सेकेंड, हर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। सर पर सेकेंड और 1 सेकेंड तो सेम ही चीज। यस, सेम चीज है। पर सेकेंड का मतलब इन 1 सेकेंड। कोई भी काम अगर मान लो कि 2 सेकेंड में हो रहा है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो पर सेकेंड निकल जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। इज दिस क्लियर? यस सर। पांचवा प्रॉपर्टी, ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एंजाइम may require cofactor and coenzyme for their activity. Enzymes may require, नहीं तो सोलो भी वो कर सकता है अपना फंक्शन। may require cofactor and coenzyme। कोफैक्टर और कोएंजाइम का डिफरेंस समझा दिए थे सुबह आपको। ओके, यस कि नो? यस सर। cofactor and coenzyme they need, okay। जैसे कि some enzymes are composed of protein part, जैसे कि पेप्सिन। some enzymes are composed of only protein part, जैसे कि पेप्सिन। whereas other enzymes are composed of both protein part and non-protein part. An enzyme, the complete enzyme molecule with both protein part and non-protein part is known as holoenzyme। आपको बता दिए थे सुबह ही। holoenzyme is equal to cofactor, इधर cofactor या coenzyme। holoenzyme हो गया cofactor या coenzyme प्लस apoenzyme। क्योंकि the protein part is known as apoenzyme। okay, if an enzyme is composed of, if an enzyme is required for its activity a non-protein part, the non-protein part is either cofactor or coenzyme and the protein part is the apoenzyme, and that complex, that functional enzymatic complex will be called as holoenzyme when the enzyme is associated with either cofactor or coenzyme. If this cofactor or coenzyme is tightly associated with the enzyme in the covalent linkage, then that cofactor or coenzyme, that non-protein part is called as prosthetic group। अगर tightly attached है तो so the complete enzyme molecule with both protein part and non-protein part is known as holoenzyme। The protein part is known as apoenzyme। Non-protein part may be either cofactor or coenzyme or both। दोनों भी हो सकता है। किसी एक एंजाइम के लिए एक कोएंजाइम भी जरूरी हो सकते हैं, साथ में कोई नॉन इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं जरूरी, दोनों साथ में जरूरी हो सकते हैं।
तो वो एंजाइम के लिए दोनों जरूरी है। जनरली coenzyme is organic molecule which is such as NAD, NADP, FAD, etc. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस सर। और सर मेटल आयन? मेटल आयंस क्या बोल रहे हो? वो इनऑर्गेनिक, हाँ मेटल आयन। मेटल आयंस भी तो इनऑर्गेनिक आयंस ही हुआ ना। मेटल आयंस हम लोगों को जरूरी है। आयरन के दोनों स्टेट, फेरिक एंड फेरस। फिर देखिए मेटल आयंस कौन कौन से जरूरी है। जिंक जरूरी है, कॉपर जरूरी है, सर मैग्नीज जरूरी है, सेलेनियम जरूरी है, और भी है। कैल्शियम को नहीं रखते हैं सर इसमें? कैल्शियम भी जरूरी है, लेकिन अभी आप मेटल आयन बोले ना, कैल्शियम इज नॉट द मेटल। इनऑर्गेनिक आयन जब होता, इनऑर्गेनिक आयंस अगर पूछोगे हमसे, तो इसमें मेटल आयंस प्लस नॉन मेटल आयंस दोनों आ गए। तो मेटल आयंस ये सब हो गए। नॉन मेटल आयंस में आपके कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, और भी। आया समझ में? आगे चले। यस सर। ओके। इतना अगर आप समझ गए हैं तो now we will see the mechanism of enzyme action. See, you know this, that enzyme, लेकिन इसमें फिर पहले एक फिगर आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। 1 second, I'll draw one figure. दिख रहा है स्क्रीन बच्चों आपको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पिक्चर, वो क्लियरली दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा सर। ये जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, इसका पिक्चर बना रहा हूँ। और इसी में आपको लॉक एंड की हाइपोथेसिस वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और लॉक एंड की हाइपोथेसिस चेंज हुआ, फिर इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस आया था उसके बाद लेटर 1959 में। दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन टू यू बाय द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? देखा है आपने ये पिक्चर? यस सर। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? की और लॉक वाला जो एंजाइम में सबस्ट्रेट से जुड़ता है वो। यस। These are substrates. ठीक, ये है एक्टिव साइट। And in this step, substrate is
active site.